Referee for this match will come from Iraq. And the two umpires from Sri Lanka and Malaysia. Well, we've seen some fairly lopsided games in the pool stages. These two teams have, as I said, won quite easily in their pool games. And even, dare I say, in the semi-finals. Now it will be a real test. Calling the captains forward for the toss of the coin. Al-Ghali Basim Rasim Mehebel from Iraq. So India. So India will look to set out a marker with the first raid. Iran going to one final huddle. Is there going to be a second gold medal? Atrachali just handing over the pennant. And it's good to see a sport where they still do that. I think it's a nice gesture to record the match between two nations. And in fact, they're defending, not raiding, so it is Iran who go on the attack first. To be fair, India's defense has been superb, but that's the first points for Iran. Good raid by Shadluchi is their coach. Mazandrani, Ghulam Riza, former judo man before going to Kabaddi. Just staying on the mat that time, the Indian raider. Is the captain, Pavan Kumar. Running out of time, just gets back with, wow, 1 second remaining. India's coach, Edecheri Bhaskaran. On the raid now for Iran, Zafar Danesh. Zafar Danesh, who's one of the younger members of the Iran squad. And again, we've got a problem just with the tape on the mat. Zafar Danesh is just 19 years of age. They've got two of their players are 19 years of age. Ali Reza Mirzayan is another one. India, Afghan, have got some young talent coming through as well. So just the running repairs on the mat. Iran, with just about a minute and a half gone, leading by 1-0 at the moment. I think that running repairs have been done. Sarjeet just having a look. And time back on, and India is Vishal Bhardwaj.
Claims the touch. And stepping forward that time, Milad Jabari. So tied up at 1 apiece now on the raid for Iran again. Shadluichi, who is in the Pro Kabaddi League in India. He's the best defender in the league. Just running the clock down, 23-year-old. It's great that there is now, or rather there are now leagues around the world where these athletes can make a living. Pavan Kumar on the raid again for India now. No touch, but having to take evasive action was Nabakash, and they've got him. And pulling him back from the midline to make no mistake, and no chance of him getting there. Is Nabakash drives the ankle hold and then just pulls back. So timeout has been called by India. Charlie looking like he might have injured himself a little bit. In fact, it's a timeout, just trying to fix that bonus point line again. The Iran coaching staff looking very relaxed. On the raid goes Zafar Danesh again. Won a silver at the Junior World Cup. Claims he got a touch. Being waved away by the Indians. We'll see if the umpires award the point. They do indeed. It's the bonus point. So now coming forward for India, Naveen Kumar. Naveen Kumar, who plays for Darbang Delhi, gets the touch. Took up the sport because his granddad encouraged him. His granddad formerly doing kabaddi as well. Shadluichi. Did he get the bonus point then? He feels he did. Not awarded by the judges, but Iran still leading 3-2. Just validating the raid over the bulk line. So close again from Naveen Kumar to just going over into the lobby. A couple of really good referrals in the women's final by Chinese Taipei. The judge or the umpire just wanting a word with both captains. So I would think that what's happening is there's a little bit of chat from the defenders. The raider, of course, has to keep the cunt going off Kabaddi. Well, he's gone into the lobby now, Zafar Danesh, so if there's no touch, and the touch is awarded to Iran, and not going to go upstairs. Vishal Bhardwaj sits down, and it is now Iran 4, India 2. Pavan Kumar, captain of India again, on the raid for his side. Is he going to get that brilliant covering defence? Oh, did he get the foot over? I think the whistle may have gone. But it was great covering defence initially by Reza Mir Bagheri. I think the points are going to go to India. So he's snared here, but then gets his foot over the line. So Iran
lose 2 points. That was a brilliant raid in the end by India, who tied things up at 4 apiece. And there was a touch again there. Shadluichi. So Iran move back into a 5-4 lead. 6 minutes gone. Aslam on the raid now for India. Aslam from the Paneri Poltons gets the touch again. Good raid by him. So we are tied up at 5 apiece. Reckons he's got the bonus point again, Zafar Dinesh. Certainly trying to bluff that he did it if he didn't. This time he gets a touch, so will he get 1 point or 2? Just the one. So that was for the touch. There was no bonus point. To touch over the bonus point line, the other foot must be in the air. Naveen Kumar. The awareness of the players just to, as they retreat, stay within the court and not go into the lobby. Pursuit raid. Going to be called back. India are convinced there was a touch. So there will be a referral now, and we'll consult the video. Hard to tell from that angle whether there was a touch. Claiming that he got Jabari. I think in a game such as this, where both teams are vying to be the #1 in the world, neither is going to give an inch. Although Kabaddi is meant to be a game of honesty, from that again, it just doesn't look like there is a touch. But the video umpire has a little bit more technology to view. So Iran wait nervously. Players and their coach just looking around at the video official. The decision is coming down now. So the review is there was no touch. So no point to India, and Iran raid again. Shadluichi claiming a touch, and I think that time there was one. So Iran now open up a 2-point cushion. Still not a huge margin. It's the 5-point cushion in games like this that really count. Aslam. Iran with that full quota. No touch, he was going for the foot. For the toe touch. Immediately chasing back again, the pursuit from Zafar Dinesh. Don't think that was a bonus point either. I think his foot in the main court was not in the air. Second one might have been successful. Let's see how the judges ruled it. So a technical timeout has been called. So a green card, a warning
for an Indian player. Now, nothing to worry about with the green card. Clearly a little bit of frustration on the sideline from the Indian players, substitutes. Aslam comes on the raid again, approaching the halfway stage of the first half. He's got there. Well, it was a sole attempt to tackle from Reza Mirbagari. Comes around and didn't manage to tie up the arm. Just what India required at that point in time. Back to 1 point. Iran 7, India 6. Most important. Oh, he's going to get there this time. That'll be 2. Well, is it 2 or did he get the bonus point as well? Certainly it was 2 defenders. So 2 given to Iran. And there's a little bit of arguing going on the mat. India not happy. The score should read, yeah. Oh, it's in fact, so they did get the bonus point as well. So that is 3. So super raid and Iran now have a 4-point cushion. And there is more pressure, you feel, on India to win today than there is on Iran. Iran, the defending gold medalist, but India, the home of Kabaddi. They believe that the gold medal is theirs. And they lost it last time around at the Asian Games, and they want it back. They want it back badly. So do the people of India. Well, they've got 1 because their women won today. Of course, there is plenty of argument as to, well, to see what the referee has just gone over to the side. So I think they're saying that there were 2 points in that raid. India getting a little bit frustrated. And again, they're just fixing the mat. Well, I said that Kabaddi hails from India, and it does, but there is also an argument that a very similar version of the game is played in Iran, and rather than saying Kabaddi, as they cant Zoo Zoo. So that's why Iran are a strong nation in the sport. There's also a version in Turkey that they believe as well was created, claiming the touch there. No touch given. I thought Aslan actually went into the lobby after he claimed the touch. Nabapikash on the raid now for Iran. It's going to be an empty raid. There is also a version in Indonesia where they can gala gala. So now we have the Iran coach is going to get a green card. Hazan Darani, Ghulam Reza is being warned. The
I must admit, the referee, very good. Why are you talking? And he's got control of this match. I've got to give him his due. And there is a touch this time. A good raid coming from Pavan Kumar at a time where his team really needed it. Zafar Dinesh again comes forward, facing 5 defenders. Got instructions from his captain just before he crossed the midline. Well, what has happened there? Something upset the Iranian captain. And it sounded like there was a comment shouted from the sidelines. Now the two captains able to have a smile, know each other from the Pro Kabaddi League. Pavan Kumar with now the Tamil Talivas. Well, I think that Edicheri Bhaskaran needs to just listen to the referee, or he could find himself in a bit of trouble. And the argument continues. India are still arguing the case. Well, should only be the captain talking. Now Atrachali comes in to give his 2 penneth. And we can finally get on with the match. Zafar Dinesh, and he gets there this time. So a good raid by Iran. Coming across, he was in the... Ooh, I think he landed in the court. Certainly India aren't going to refer that one. So Pavan Kumar on the raid, the captain of India. A 3-point deficit at the moment. And he'll have to just show a little bit of restraint after being frustrated with the officials just now. So an empty raid from India. And a substitution now coming on. Nitin सब्सक्राइब टू आवर चैनल दोस्तों। परसों आपको ऑक्शन का लाइव देखने को मिलेगा इसी तरह से। पीकेएल सीजन 10 का ऑक्शन देखने मिलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Zafar Dinesh looking for the bonus point. Iran, you feel, just want to keep that 3-goal cushion, or 3-point cushion rather, up until half-time. Naveen Kumar now for India.
I think he got a touch that time on Jabari. And Jabari concedes that he did. So India closed the gap. That was really good, just reaching out, got hold of the thigh, gave the thigh 5 on the midline. यहाँ भी टक्कर का मैच चल रहा है बहुत. Back on the mat, which is all important. 5 defenders and they look to come around. Shadlucci. Have an empty raid. He glances up at the clock. Naveen again. Captain waiting. And he's got away again. So just losing the ankle hold that time. Suddenly the momentum shifts as we see Nabi Bakash making his way over the side. Another substitution for India. Sunil Kumar comes in. Surjit sits down. Sunil Kumar plays for the Gujarat Fortune Giants as we have a timeout. Originally hails from Sonipat, famous for its kabaddi in the state of Haryana. Both coaches really trying to get their teams to do what they want them to do and listen to what they're talking about. There's a lot of conversation going on amongst the Indians, and there are the Indian women. They won their gold medals. They're not still wearing those. The men training now by just 1 point with just under 5 minutes remaining in the first half. The women, of course, winning by just 1 point over Chinese Taipei. You get the feeling that this final is going to be just as close. Iran's match in 2018 against the Republic of Korea, that was a 27-25 point win. So just the 2 points in it. India in their finals against Iran in previous Asian Games have tended to win quite easily. A really good ankle hold that time from the captain. यहाँ नीतीश कुमार की तरफ से डिफेंस करते हुए 1 पॉइंट इंडिया को मिलते हुए उसी से स्कोर हो चुका है 10-12. Able to defend their gold medal from Jakarta. Oh, jumping over, but a great grab that time. Superb from Kumar Nitesh. और ये फिर से टॉन शेरावत रेड के लिए जाते हुए किक का प्रयास. So Iran still have the lead, 2 points, 3.5 minutes left in the और ये हैंड टच का बहुत ही बढ़िया प्रयास रहा और ये फिर स्कोर एक बढ़ते हुए 11-12 का स्कोर हो चुका है. बहुत ही टक्कर का ये मैच चल रहा है. अभी मैच शुरुआत ही हुआ है. यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है. विशाल भारद्वाज को बाहर किया जा रहा है और नीतीश नगरवाल को शायद अंदर किया गया है. असलम इनामदार अंदर गए हैं. There was indeed. So another substitution और यहाँ for पे India. बहुत ही सुंदरता से रेड करते हुए. So Vishal goes out. Back in is Aslam. स्कोर जो है ईरान का 12, भारत का 11. 1 पॉइंट का लीड बनाए हुए हैं. All 7 back on the mat. आवाज़ अब तक आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों. आप कमेंट कर दें. To try and level things up before the half-time break. Well, the Indian support finding its voice. Just 4 defenders now for Iran. He's going to get there again. The chain broke, and that's why they look at each other. Reza
Baghetti was going, why बहुत did ही you सुंदर go? यहाँ पे डिफेंस किया गया और ये पवन शरावत की जोश आप देख सकते हैं। पवन शरावत बहुत यहाँ पे खुश होते हुए Stop the raid. They're now tied up at 12 apiece. 144. Iran suddenly और यहाँ पे स्कोर जो है बराबर हो चुका है, 12-12 का स्कोर है। in the first half. India will look to pounce. They've grabbed the ankle. बहुत ही टक्कर का मैच चल रहा है यहाँ पे। हाफ टाइम आउट लिया गया है यहाँ पे, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। स्कोर देख सकते हैं 12-13, भारत 1 अंक से आगे है। बहुत ही टक्कर का ये मैच चल रहा है। ऐसा मैच आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना खतरनाक मैच है ये। चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आपको पीकेएल सीजन 10 का ऑक्शन जो है लाइव इसी चैनल पे इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक पहुंच सके अपडेट किए। मैं लाइव आ चुका हूं 8:30 बजे 9 तारीख को। तैयार रहिएगा, 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में मैं आ जाऊंगा लाइव। और स्ट्रीम को लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो, और दोस्तों में शेयर करें। यहाँ बहुत ही टक्कर का मैच चल रहा है, कभी ईरान आगे तो कभी इंडिया आगे। बिल्कुल ही महिलाओं का जैसे मैच चल रहा था वैसे ही मैच चल रहा है। क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करें कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है। और यहाँ पे नीतीश कुमार को थोड़ा सा चोट लगते हुए इसीलिए टाइम आउट लिया गया था। और यहाँ पे फिर से पवन शरावत जो है वो रेड करने के लिए 2 का डिफेंस बना हुआ ईरान के कोर्ट में। और ये टैकल का ट्राई था लेकिन यहाँ पे सेव कर दिया गया। कितने पॉइंट यहाँ पे हैं देखते हैं, यहाँ पे कितने अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 1 अंक दिया जा रहा है। यहाँ पे सुल्तान की तरफ से रिव्यू लिया जा रहा है, सॉरी 4 अंक दिया गया जिसमें से सुल्तान की तरफ से रिव्यू लिया गया है। फजलत चली ने रिव्यू मांग किया है। 4 पॉइंट दिया गया है भारत को। इससे और लीड बंद करके 17-12 का स्कोर हो चुका है। भारत का 17, ईरान का 12। यहाँ पे रिव्यू की मांग की गई है। यहाँ पे रिव्यू लिया गया है। To me, Pavan Kumar, there's no doubt he got over the line. The question was whether Atrachali touched him or he touched the midline. And I don't know if he does. Like again, he avoids. यहाँ पे देख सकते हैं पवन शरावत और फजलत चली बात कर रहे अपने मुस्कुराते हुए। बहुत ही टक्कर का मैच है। Just watching on the big screen the replay. India feel confident. क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट करें दोस्तों। आपको अगर लाइव देखना है पूरी एचडी में तो आप सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेकर के जा सकते हैं। वहाँ पे सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले ले, या फिर आप टीवी में देख सकते हैं सोनी 1 2 3 4 5 6। ये जो है 6 सोनी लिव 4 में आपको लाइव देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आपको मोबाइल में देखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। 1 पॉइंट दिया गया यहाँ पे भारत को। और यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया गया। 1 अंक देने के कारण 14 और 12 का स्कोर है। ईरान 2 अंक से आगे है। और यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फजल को बाहर किया गया और एक रेडर 7 नंबर के जर्सी में अंदर किया गया है, वो रेड करने के लिए जाएंगे। यहाँ अगर यह लोना लग जाता है यानी ये रेडर आउट हो जाते हैं तो ईरान का लोना लगेगा और 3 अंक भारत को और मिलेगा, जिससे 17 स्कोर हो जाएगा। तो खाली भारत की टीम को यहाँ पे बोनस ले लिया गया है और भारत को टीम को यहाँ पे खाली सब्र करना है। जैसे सुबह की महिलाएं जो भारत की वो सब्र नहीं कर पा रहे थे, पॉइंट अंक दे रहे थे, तो ऐसा नहीं करना है। ये टाइम लगभग ख़त्म होने वाला 30 सेकंड और ये जाते हुए। और यहाँ पे पवन शरावत रेड के लिए, नवीन जो है वो रेड के लिए गए हैं 1v1 का सिचुएशन और ये छू करके आते हुए। तो यहाँ पे इंडिया का 17 अंक हो गया है और ईरान का जो है
वो 13 अंक हो गया है। Run out of time. It must be a do or die raid. No, it's not. Just gets back in time. Is he going to surrender or not? In the corner he goes. कमेंट करके बताएं दोस्तों, कौन जीतेगा कमेंट करके बताएं। And it is an all out for India just before the break. And that is going to be half time. There will be no time to continue. और यहाँ पे अभी हाफ टाइम हो गया है। Because obviously there's a little bit of tension in this one. But India, after being trailing, हाफ टाइम का स्कोर देख सकते हैं। अभी आपका चालू हो जाएगा। यहाँ हाफ टाइम हुआ है। इंडिया का 17, ईरान का 13, 4 पॉइंट की लीड बनाए हुए भारत। हाफ टाइम का स्कोर है, देख सकते हैं। स्ट्रीम को शेयर कर दिया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, ये मौका आपको फिर दोबारा ना मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बता दूं कि जो पीकेएल सीजन 10 का जो ऑक्शन है आपको इस पर लाइव देखने को मिलेगा। आपको लाइव देखने को मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, ब्लैक स्क्रीन हट गया, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इंडिया, बिल्कुल इंडिया जीतेंगे। मैं बता दूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पीकेएल सीजन 10 का ऑक्शन लाइव इसी तरह से देखने को मिलेगा 8 बजे से 9 अक्टूबर को। और प्रो कबड्डी भी आपको मैचेस यहाँ पे इसी तरह से देखने को मिलेगा, इसमें या फिर छोटा स्क्रीन करके दिखाया जाएगा प्रो कबड्डी लीग। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आपको खोजना ना पड़े, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें। हम लोग बहुत कम ही दूर हैं अपना माइलस्टोन पूरा करने के लिए। सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें, तो मैं भी इसी तरह से आपको हमेशा इसी तरह से लाइव दिखाता रहूँगा। बस आप लोग खाली प्यार इसी तरह से दिखाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। अभी हाफ टाइम बचा हुआ है, सेकंड हाफ टाइम। यहाँ 4 अंकों से लीड बनाए हुए भारत। 17-12 का स्कोर है, भारत का 17, ईरान का 12 स्कोर है, सॉरी 13 स्कोर है। 3 पॉइंट का लीड बना हुआ है, 4 पॉइंट का। तो बस आपका अपना प्यार दिखाते रहे दोस्तों। अभी कुछ ही देर में मैच यहाँ पे चालू होने वाला है। और कबड्डी जोन हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, जाके फॉलो कर ले। तुरंत अपडेट वहाँ, तुरंत कुछ भी मैच होता है, स्क्वाड निकलता है, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन होता है कबड्डी से रिलेटेड, तुरंत वहाँ पोस्ट कर दिया जाता है तुरंत। तो आप जाके वहाँ के फॉलो कर सकते हैं हमें, कबड्डी जोन के नाम से है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप। कोई अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है कबड्डी से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारे इंस्टाग्राम के होम पे भी आपको प्रोफाइल पेज में भी देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, इससे आपको कुछ नहीं जाता है, आपका कोई खर्चा नहीं है, लेकिन इससे मेरा बहुत कुछ फ़ायदा होता है। आपका कोई घाटा नहीं है, मेरा फ़ायदा हो जाता है। बस इसी तरह से आप प्यार दिखाइए। अगर आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहा तो हर बार इसी तरह से लाइव दिखा जाएगा। मैं बता दूं कि नेशनल्स जो होने वाले नेशनल गेम्स गोवा में, उसका भी लाइव आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जूनियर, सीनियर, सब जूनियर नेशनल्स मैच का भी वीडियो देखने को मिलेगा। SGFI जो होने वाला है दिसंबर और जनवरी के महीने में, वो भी आपको इस पे लाइव देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे कुछ ही देर में अभी मैच चालू होने वाले हैं दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो कबड्डी वाले लवर हैं सबको शेयर कर दें। और आप भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, अगर कबड्डी से आप प्यार करते हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कबड्डी से रिलेटेड सारा वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, अपडेट हो गया, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इतना देर में दोस्तों शेयर कर दे, कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कर दे कबड्डी के दोस्तों को, कि मेरा भी कुछ भला हो जाए। So the players making their way now back out onto the mat for the second half to get underway. Does Mazandrani Golamreza have a plan? Can he inspire his team? 95% बोल रहे हैं भारत जीतेगा, 5% बोल रहे हैं इंडिया जीतेगा। क्या लगता है दोस्तों, एक बार कमेंट कर दें।
कमेंट करके बताएं कौन जीतेगा। 95% बोल रहे हैं भारत और 5% बोल रहे हैं ईरान। KVS नेशनल, बिल्कुल आप बोलिए तो मैं KVS का नेशनल भी आपको यहाँ दिला दूंगा और अपलोड कर दूंगा वीडियो। बस अपना प्यार दिखाते रहे दोस्तों। बियरपाल सिंह जरूर KVS का नेशनल हो गया। युवा कबड्डी भी हमारे चैनल पे लाइव चलता है दोस्तों, तो आप उसको अगर देखना तो युवा कबड्डी भी आप देख सकते हैं। चैनल मोनेटाइज होने में मात्र 800 घंटा बचा हुआ है दोस्तों, मात्र 800 घंटा। हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, सिर्फ 800 घंटा बचा हुआ है। उसको पूरा करा दे किसी भी तरह से तो इस महीना हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। अपना प्यार दिखाते रहें और इसी तरह से देखते हैं। मैच चालू हो चुका है, बोनस का ट्राई रहा। यहाँ पे 8 नंबर के जर्सी में बोनस का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है दोस्तों, इसीलिए ऐसा हो रहा है, अटक रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। घबराए नहीं, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। वाईफाई जो मेरा है थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये थोड़ी देर में चालू ऐसे ही हो जाएगा। आठ नंबर के जर्सी में है, रेड कर रहे हैं। Up he goes. Does his foot go outside? No, I think he kept it in brilliantly. He did indeed. No appeal from Iran. So now it's a 6-point lead for India. As I was saying, it was a demonstration sport as well at the Asian Games in 1951, I think it was, or 82 anyway. And then was finally introduced in 1990 to the Asian Games. 1951, of course, was the first games of the Asian Games, and they were in New Delhi, and that's why it was an exhibition sport. Iran desperate now. Gotta grab him. They take him out over the lobby. So finally, Iran come back. Tackle made here. And driving him over to the side. That was Bastami. So Iran edging their way back in this match. Still a long way to go, 17 minutes. Naveen Kumar. Kumar almost stumbled, and Iran thought about pouncing but then held off. Naveen Kumar is the first player in the Pro Kabaddi League to have been born in the 2000s to play in the league, so that's a fairly unique achievement by him. They lose a defender for stepping over the baseline. It's another point to Iran. Suddenly, it's only 3 points. And we're just stopping the clock while one of the Iranian players does his shoe up. Bastami just retying his lace. As once again, Naveen Kumar comes forward for India.
It's from Sultanpur in Haryana, claiming a touch and having to concede that the touch was made. So once again, Mirbageri makes his way to the side. And on the raid comes Zafar Dinesh again. It's a 4-point margin. Iran need to keep accumulating points if they can. They'd love to get India all out if they could. Empty raid from Zafar Dinesh. Just a quick change in the defensive duties. Abubakash just moving to the left-hand side of the centre defensive. Toying with coming round. Certainly, I think if he goes deeper, they will. Claims he got a touch, and Abubakash admits that he caught his toe. Abubakash, who competes for the Sari club in Iran. And almost went on his own then. He's going to go now, but that will be an easy touch. I think there were two there. Yeah, I believe there were two touches here. There's one there, and there's definitely one there. So he got hold of Surjit as well. So it should be 2 points to Iran. And there were clearly 2 points scored. Again, we're seeing running repairs to the mat. 21-16 का स्कोर है, देख सकते हैं इंडिया का 21, ईरान का 16। Seems to be a lot of trouble down in that corner. So India on the raid again. Naveen Kumar. Iran with their full quota on the mat. Oh, that was a touch, and I think he's got a second. I think he did get there before there was the tackle from Mirbageri. Naveen got the touch there. Oh no, I think he was off before he got the touch over the midline. यहाँ पे रिव्यू लिया गया है और यहाँ पे शायद चोट लगा है नवीन कुमार गोयत को. And Naveen is certainly in a bit of pain from that challenge. I think whether he's dislocated something as he goes across here. I think he was out of the lobby. यहाँ पे मैट उखड़ गया था. If not, it's a great raid and he's going to get 2 points for his team. अपडेट है यहाँ पे, नवीन कुमार को चोट लग चुका है. Maybe it was the nose actually, but he was holding his hand as if 21-18 he'd का injured स्कोर हो that. चुका है. Massaging inside of his ear there. Sinuses though, of course, attached to the ears, so यहाँ रिव्यू लिया गया है. the video umpire has made his decision. अब बोनस पॉइंट मिला गया है So भारत it's going को to be और 1 एक point पॉइंट दिया all. I गया think it's going ईरान to be को. the bonus point, and then there will be a point for Iran because they took him out of play. So
bonus point was scored, but he did not get home. So 3 defenders now, and Iran are back to within 3 points. Time on now, just going before the whistle had gone. Zafar Dinesh, he's got a touch, did he, or not? No. Having to go back again. He's not going to get back this time. And a super tackle from India. Great ankle hold coming from Nitin. Nitin getting both ankles. Approaching the halfway stage. Just a couple of minutes till we get there. Iran will not be panicking just yet. It's an empty raid from India. Iran want to again get something from this raid. Nabi Bakash. An empty raid from Iran. So now for India, Aslam on the raid again for them. Oh, that is a bonus point, I think. Not paid, though. Iran a little bit relieved about that. Shadluichi again on the raid. Defense by India. He's forcing them back into the corners, but क्वालिटी बढ़ा ले दोस्तों, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा ले अपने ओर से 340 या 400 360 या 420 वाला कर ले तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। जी अविनाश में तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, लाइव करूँगा थोड़ा अच्छा सा। भी क्या है कि पॉकेट में पैसा ज़्यादा नहीं ना है, अभी इस चैनल सब्सक्राइब मोनेटाइज हुआ नहीं है। 800 घंटा चाहिए मोनेटाइज कराने के लिए, उसके बाद पैसे आने लगेंगे तो सारा चीज़ में सेटअप ले लूँगा। अभी मैं अपने पॉकेट से ही सारा खर्चा लगाता हूँ लाइव चलाने के लिए। और कोई चैनल में लाइव आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कबड्डी जोन में देखने को मिलेगा दोस्तों। नहीं तो आप जाके फिर आपको देखना तो ये टीवी में भी आप देख सकते हैं, सोनी 4 पे आ रहा है, सोनी 10-4 पे। और साथ ही साथ आपको सोनी लिव ऐप पे भी आ रहा है देखने को। वहाँ पे आपको सोनी लिव पे आपको मंथली लेना पड़ेगा, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। Bastami doing great work in the right-hand corner. So now, India down to 3. Gets the touch. He's going to get there, though. That's going to be 2. Or did he get all 3? I think he got 2 at least. He got 1 there, and he escapes that one. यहाँ पे मैच बहुत ही टक्कर का चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। 2 अंक यहाँ पे ईरान के प्लेयर ले गए हैं। बहुत ही खतरनाक मैच हो रहा है यहाँ पे। हमें लग रहा था भारत एक तरफा जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफा बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, अर्जुन देसवाल को अंदर ले जाया जा रहा है। स्कोर देख सकते हैं 24-22 का स्कोर है। यहाँ पे अगर लेना खाते हैं भारत के टीम तो 3 अंक चल जाएंगे सीधे, यानी 3 अंक यानी कि लीड पे आ जाएंगे। 25 हो जाएगा ईरान का, भारत का रहेगा 24। अगर भारत के प्लेयर अगर बोनस लेकर के आउट होते हैं तो बराबर हो जाएगा, 25-25 का स्कोर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं बराबर हो जाएगा, अगर बोनस लेके आते हैं तो 25-25 का स्कोर हो जाएगा।
अगर बोनस लेके नहीं होते आते हैं, आउट हो जाते हैं। हाँ, बोनस आ चुका है, तो अगर आप आउट भी होते हैं तो 25-25 का स्कोर रहेगा। अगर पॉइंट लेके आते हैं बहुत ही फायदा रहेगा। यहाँ पे निकल सकते थे, नहीं निकले, और यहाँ पे ऑल आउट कर दिया गया भारत को दूसरी बार। भारत यहाँ दूसरी बार ऑल आउट हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर जो है बराबर 25-25 का हो चुका है। And it is an all-out for Iran, and they are definitely back now, and their women's team are on their feet. Well, some of them anyway. Great cover tackle. हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। Arjun was going nowhere. Sunil comes back on. Arjun has to sit back down on the bench. His time on the match short. Tied at 25 apiece as we've just clicked past the halfway stage of the second half. Who is going to take this match? Neither team prepared to give an inch. Sadluichi is going to have an empty raid this time. 25-25 का स्कोर हो चुका है बराबर दोस्तों। बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है ये, देख सकते हैं। बहुत ही एकदम टक्कर का मैच है। आखिरी का कुछ समय ही बचा हुआ है। हमें लग रहा था भारत यहाँ पे एक तरफा जीत करेगी, लेकिन नहीं। जैसे सुबह को भारत और चाइनीज ताइपाई का मैच चला टक्कर का, वैसे ही अभी भी टक्कर का मैच चल रहा है। कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और यहाँ पे देख सकते हैं पवन सरावत बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई की ओम्बुड्समैन को यहाँ पे पवन सरावत को कम से कम मल्टी रेट पॉइंट करना होगा। यहाँ पे बहुत ही आराम से पवन सरावत रेट कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। क्या उनके माइंड में कोई प्लान है? वो कैप्टन है, उनको कोई प्लान। और यहाँ पे क्या टच है? नहीं, यहाँ पे टच नहीं है, किक का प्रयास था। और यहाँ पे देख सकते हैं ईरान के नंबर 1 रेडर हैं अभी तक के। हर मैच में अच्छे खासे अंक लाए हैं इन्होंने। देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडर जो है बहुत ही अच्छे रेडर है। ईरान के हर मैच में पॉइंट इन्होंने लाया है। नया उभरता हुआ सितारा है, यंग रेडर है। टाइम दोस्तों अभी 10 मिनट के लगभग बचे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, क्या कि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कितना मिलेगा, तो 1 पॉइंट यहाँ पे मिलते हुए भारत को। भारत 26 ईरान 25, 1 पॉइंट का लीड आ चुका है भारत के पास। बहुत ही सुंदर मैच ये देखने को मिल रहा है। कबड्डी लवर्स के लिए ऐसा सुंदर एकदम रोमांच से भरा मैच आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और किसी यूट्यूब चैनल पे भी ये नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ हमारे चैनल। यहाँ पे क्या यहाँ पे टच का प्रयास था, लेकिन टच नहीं हो पाया, थोड़ा लड़खड़ा गए थे रेडर। और ये बोनस का लेने का प्रयास कर रहे, लेकिन हमारे नीतीश कुमार वो तैयार है। फिर से वो लड़खड़ाते हुए, क्या वो सेल्फ आउट है या फिर टच है? हमें तो लग रहा है रेफरी शायद अंक देंगे, नहीं तो अभी बाहर कर देते हैं। और ये नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा दोस्तों। और यहाँ पे रिव्यू शायद मांगा जा रहा है भारत के तरफ से। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, रिव्यू मांगा गया भारत की तरफ से। The shirt, front of the shirt, it just looked like it rippled as he goes past. We're going to have a video review of this. India convinced there wasn't a touch. Iran convinced. यहाँ पे रिव्यू लिया गया दोस्तों भारत की तरफ से। भारत कह रहे हैं कि यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं है, सेल्फ आउट हुए हैं, इनको पॉइंट मिलना चाहिए। वही ईरान का कहना है कि टच पॉइंट है।
the shirt, which means that there may be a touch. Decision coming down. क्या हो रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम। जियो जिंदगी। So the point goes to India, and that is for the Iranian player did not get a touch. 7 GB डाटा यूज़ हो गया दोस्तों इसी मैच में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। 10 GB बचा हुआ था। देख सकते हैं 26-25 का स्कोर है, 1 पॉइंट से भारत आगे है। यहाँ पे पवन सहरावत रेड करते हुए, पवन सहरावत जो है वो रेड में गए हुए हैं। और यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया दोस्तों। ईरान की तरफ से सब्स्टिट्यूट देखने को मिला है हमें। स्कोर बढ़ चुका है दोस्तों। अब टाइम जो है लगभग दोस्तों 7-8 मिनट के लगभग बचेंगे। और यहाँ पे टच का ट्राई है, क्या ये टच मिलेगा? रेफरी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे झूठ बोला गया क्या ईरान की तरफ से? यहाँ पे शायद कार्ड दिखाया जाएगा कि सारे लोग हल्ला कर रहे थे। नहीं, यहाँ पे रेड को भेजा जा रहा है। और फिर से पवन सहरावत जो कि कैप्टन है भारतीय टीम के, 17 नंबर के जर्सी में 4 के डिफेंस में रेड करने के लिए जाते हुए। बहुत ही टक्कर का ये मैच चल रहा है, रोमांच से भरा हुआ। कबड्डी प्रेमियों के लिए ऐसा ही मैच हम देखना चाहते हैं। टक्कर का मैच हो तो थोड़ा मजा आता है। जैसे कल का मैच सेमीफाइनल था भारत बनाम पाकिस्तान, तो उसमें पाकिस्तान को एक तरफा हराया गया, तो उसमें मजा नहीं आया देखने को। लेकिन ऐसा जो रहता है मैच। अब यहाँ टाइम आउट मांगा गया ईरान की तरफ से। Otherwise, it looks like India are going to claim both gold again. बस नीरज रुक जा, आज के इतना काफी है। 3 अंकों का। जब पसीना नहीं रुकता तो मैं क्यों रुकूं? 3 अंकों का। New Limca Sports with real lemons, glucose, electrolytes, and no gas. Time for faster rehydration. और यहाँ पे पॉइंट मांगा जा रहा है, ईरान की तरफ से पॉइंट मांगा जा रहा है। क्या ये मिलेगा टच पॉइंट? रिव्यू लिया जा रहा है ईरान की तरफ से। यहाँ पे भारत के सारे लोग हल्ला कर रहे हैं, इसीलिए उनको समझाया जा रहा है कि सारे लोग ना बोले, सिर्फ कैप्टन बात करे। स्कोर देख सकते हैं 28-25, 30 अंकों का। 3 अंकों का अभी भी भारत लीड बनाए हुए हैं। बहुत ही टक्कर का मैच चल रहा है दोस्तों। थोड़ा सा बहुत ही खतरनाक मैच है। ऐसा मैच आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, कि आगे भी इसी तरह का अपडेट आपको हर तरह का मैच देखने को हमारे इसी चैनल पे मिलेगा। हमारे चैनल मोनेटाइज होने में मात्र 800 घंटा बचा हुआ है दोस्तों, सिर्फ 800। अगर 800 लोग जो हैं एक घंटा का कोई भी मेरा वीडियो जाके देख लेंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप लोग का बहुत मेहरबानी होगा दोस्तों, तो जाके प्लीज़ चैनल मोनेटाइज करने में मदद करें दोस्तों। और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। एशियन गेम के हो गए और भी बहुत सारे मैचेस हो गए। 28-25 का स्कोर। Who was part of the major comeback that Iran had against India. भारत जो है 5 सब्स्टिट्यूट कर चुका है और 1 टाइम आउट लिया है। वही ईरान जो है 3 सब्स्टिट्यूट कर चुका है और 1 टाइम आउट लिया है, 2 टाइम आउट लिया है। और फिर से पवन सहरावत जो है वो रेड करने के लिए जाते हुए। 4 का डिफेंस है। फजल भी बाहर है, नबी बख्श भी बाहर है, सरदुली भी बाहर है, तीनों बाहर हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफेंस को तोड़ने का प्रयास। और ये क्या टच है? नहीं, बिल्कुल टच नहीं है। 4 ही का डिफेंस बनाए हुए हैं।
डू और डाई का रणनीति करते हुए And खेल with रहे just हैं। 4 defenders. Tempted to come around and he's got a touch. और यहाँ पे ईरान के प्लेयर को बोनस पॉइंट दिया गया है। Well, the Indian women loving this. Well, I thought he got a touch, no point awarded. और ये कैच बना दिया गया और चोट लगते हुए ईरान के प्लेयर को दोनों को मुंह से There was a point. This is यहाँ पे मुंह से मुंह टकरा गया है दो प्लेयर का। India. देख सकते हैं दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा है। There's a chance for Iran. They've got him. They've snared him. Oh dear. 2 players from Iran. Clash of heads. Ugly one. They get him here and they both come in. Bang! Horrible. And that is not nice to see. And I have to say, Mir Bigari hit the deck very quickly. एक पॉइंट से अभी भारत आगे है। I'm not sure if they have the concussion rule, but I wouldn't be surprised if there's a bit of blood from that collision of heads. Not sure we need to see it again. There it was, really hard blow. Jabari was one, and this is good that they're hiding it from the crowd. It was Jabari and Mir Baghetti. The 20-year-old now, Mir Baghetti. 22-year-old Jabari. Really need those two back on. One of the frustrating things about kabaddi is when you're out having to sit there and wait until your team gets the point and then you can go back on, and of course you can only go back on in the order in which you left the field of play. Come on! One more left, push, go! बस नीरज रुक जा, आज के लिए इतना काफी है।